એટલા માટે બહુ મહત્વપૂર્ણ રચના છે. થોડીક સામાન્ય પરિચય બધાને તો છે જ, પરંતુ જે પ્રકાશકીય દ્વારા અને અહીંયા પંડિત અભયજી દ્વારા અહોભાગ્ય એવા હેડિંગમાં કેટલીક વાતો કહી છે, એનો થોડોક પરિચય કરતા આપણે આગળ અહીંયા વિચાર કરીશું. यहाँ लखे थे प्रकाशकीय वर्थी आत्म आराधना और जीन शासन प्रभावना का स्वर्णिम अवसर सर्व प्रकार से प्राप्त हो चुका है. एम लख्यु है प्रकाशकीय जेबी मंत्री तरफ थी कि आत्म आराधना और जीन शासन प्रभावना बे बात करी, इसका स्वर्णिम अवसर सर्व प्रकार से प्राप्त हो चुका है. घनी बड़ी बाबतों से आत्म आराधना का प्रसंग हमें प्राप्त हुआ है सर्व प्रकार से. भाई साहब आपको गुजराती चलता है? सर्व प्रकार थी એટલે ઉપાદાનની ઓરથી પણ અને નિમિત્તની ઓરથી પણ બે વાત. સર્વ ઓરથીમાં બધું આવી ગયું. ઉપાદાનની ઓરથી સંગી પંચેન્દ્રિયપણું પ્રાપ્ત છે. પર્યાયમાં એક ક્ષમતા છે કે આરાધના જીવ કરી શકે છે. આપણી વાત છે ને, આરાધનાને યોગ્ય જે બાહ્યમાં સંગી પંચેન્દ્રિયપણું જોઈએ પર્યાયની અંદર એ આપણને પ્રાપ્ત છે. અને નિમિત્તની ઓરથી જે સાચી ગાઈડલાઇન્સ છે એ ગાઈડલાઇનની આપણને ઉપલબ્ધિ છે. અને આરાધના કોને કહે છે? હમણાં કહ્યું ને નિર્ગ્રંથતા की भावना है ને, એમાં આરાધનાની હતી ને બીજી લીટી શું હતી રાજુભાઈ? बीजी रीति थी आराधना करके विराधन. हाँ बोलो. करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया. आराधना का यह समय बहु पुण्य. शू मतलब है आराधना? आराधना એટલે વેદ જ્ઞાન. વેદ જ્ઞાનનો અવસર આપણને પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે. અને આરાધનામાં શું કરશો? ભગવાનની આરાધના અને ભગવાન આત્માની આરાધના બે વસ્તુ છે. ભગવાનની આરાધના તો એમના ગુણગાન, એમને ગુણ પ્રગટ કર્યા છે, એના ગુણગાન કરીએ આપણે, એમને ગુણોને યાદ કરીએ, એના માધ્યમથી આપણે આત્માના ગુણોને યાદ કરીએ, એના માધ્યમથી આપણે આત્માના જે દોષ છે એની નિંદા કરીએ અથવા ગુણ દોષોનો વિભાગ જે છે આ એનું આપણે માનસિક ધારણા જ્ઞાનમાં લઈએ. પણ આરાધના તો એ છે કે એના માધ્યમથી અભેદ આત્મા ભગવાન આત્માની અનુભૂતિ, પરદ્રવ્યથી ભિન્ન, રાગાદીથી ભિન્ન ભગવાન આત્માની પહેચાન, અનુભૂતિ, આશ્રય એ આરાધના છે. સમસ્ત જે શુભ અનુષ્ઠાન થશે આજે, જેવી અત્યારે સ્વાધ્યાય પછી પૂજન और भी વક્તાઓના જે બી છે પ્રવચન, ભક્તિ, એ બધાના માધ્યમથી શું કરવાનું છે? ભેદ જ્ઞાન. શાની વચ્ચે? ગુણ અને દોષોની વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન કરી ગુણોનું ગ્રહણ કરવા અને દોષોનો ત્યાગ કરવો, સ્વભાવની દ્રષ્ટિ કરવી, દોષોની દ્રષ્ટિ છોડવી. એ પ્રમાણેનો જે પ્રયોગ કરે છે, ઉપાય રાખે છે, એનું નામ આરાધના છે. બરાબર છે? માત્ર સાંભળવું, સંભળાવવું એ કોઈ આરાધના નથી. પણ એના માધ્યમ જ આ બધા, એના માધ્યમથી ગુણ દોષોનો વિભાગ કરવો, ધારણા જ્ઞાનમાં ગુણ અને દોષનો જે ધારણા જ્ઞાનમાં સ્પષ્ટતા કરવી, સ્પષ્ટતા કર્યા પછી શું કરવું? ગુણની દ્રષ્ટિ કરવી, સ્વભાવની દ્રષ્ટિ કરવી અને વિભાવની દ્રષ્ટિ છોડવી. આ બે ખાસ વાત છે. વિભાવની દ્રષ્ટિ છોડવી એટલે જયેશભાઈ ઉપાદેય બુદ્ધિ છોડવી. વિભાવ કોઈ બી રીતે પ્રયોજનભૂત નથી, ચાહે કશાયની મંદતા રૂપ હોય કે ચાહે કશાયની તીવ્રતા રૂપ હોય, આકુલતામય જ છે.
એવું નક્કી કરવું, નક્કી કર્યા પછી એ દૃષ્ટિમાંથી ઉતરી જવું અને એકમાત્ર સ્વભાવ, ત્રિકાલી સ્વભાવ, વિતરાગ ભાવ એ જ પ્રગટ કરવા રૂપ ઉપાદેય છે. એવી સ્વભાવની દૃષ્ટિ રાખવી તો એનું નામ છે આરાધના. અનંતકાલથી ખોટી દૃષ્ટિ છે, ખોટી દૃષ્ટિનું પોષણ ના કરવું અને જે સત્ય છે એ સત્યનું પોષણ કરવું, એ આ બધું આરાધનાના અંતર્ગત કાર્ય છે. તો અહીંયા કહે છે કે આરાધનાનો સર્વ પ્રકારથી અવસર આવી ગયો છે. એમ અહીંયા કહે છે. કેમ આવી ગયો છે? કે જેના માધ્યમથી આપણે વેદજ્ઞાન કરવું છે એવી ગાઈડલાઈન બી છે. વેદજ્ઞાન કરવાની આપણી પાસે બુદ્ધિ પણ છે. બસ એટલે અવસર આવી ગયો છે. હવે શું કરવાનું? એ અવસરને એ અવસર મનાવવાનો, વેદ જ્ઞાનને કરવાનું. એટલી અહીંયા વાત કરી છે. એમાં લખ્યું છે इस अवसर में तत्व निर्णय पूर्वक स्वानुभूति के साथ निराकुल सुख का स्वाद चख कर परम आनंदित हो, यही एकमात्र भावना है. બહુ સરળ વાતો છે, બહુ સાદી સાદી પોચી પોચી વાતો છે, પચે એવી. ટૂંકમાં આ અવસરમાં તત્વ નિર્ણય હે ને, એટલે તત્વ નિર્ણય એટલે તત્વોનો નિર્ણય અને તત્વ નિર્ણય. ખ્યાલ આવ્યો? તત્વોનો નિર્ણય એ શિક્ષા છે અને તત્વ નિર્ણય એ આરાધના છે. સાત તત્વનો યથાર્થ નિર્ણય કરવો, સાત તત્વમાં હેગી ઉપાદેય શું છે એ પ્રમાણે યથાર્થ નિર્ણય કરવો અને એના માધ્યમથી આત્મ તત્વનો હું ચેતન સ્વરૂપ છું એવો નિર્ણય કરવો, એવી પ્રતીતિ કરવી, એવી અનુભૂતિ કરવી, એનું નામ આરાધના છે. સાત તત્વોનો નિર્ણય કરવો, એના માધ્યમથી આત્મ તત્વનો નિર્ણય કરવો, એ પ્રકારથી બધી આપણને શું છે? શિક્ષા છે. પણ એને પછી હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું એવી પ્રતીતિ કરવી, એ જ એકમાત્ર સ્વાનુભૂતિ આરાધના છે. અહીંયા એમ કહે છે. તત્વ નિર્ણય પર બહુ વજન આપ્યું છે પંડિત ટોડરમલજી, અહીંયા રવિન્દ્રજી સાહેબે બહુ તત્વ નિર્ણય પર. નિર્ણય જ નથી તો શું? એમ તત્વ નિર્ણય કરવો, સારું શું છે, અહિતકારી શું છે, અહિતકારી શું છે એનો નિર્ણય કરવો, એ પ્રથમ સોપાન છે, પ્રથમ સામાન્ય સમજણ છે. નિર્ણય કર્યા પછી એવી પ્રતીતિ કરવી એ બહુ મહત્વપૂર્ણ વાત છે. નિર્ણય કરવામાં એક ખાસ વાત આવે છે કે નિર્ણય કરવામાં એની સિદ્ધિ કરવી. આપણે ત્યાં આ સિદ્ધિ કરવી વાળું જે સ્ટેપ છે, જે પણ જે સિદ્ધાંતોમાં કહ્યું છે એની આપણી બુદ્ધિમાં અથવા બુદ્ધિના માધ્યમથી યુક્તિઓ દ્વારા, નયો દ્વારા, ઉદાહરણો દ્વારા આપણા જીવનમાં ઘટિત ઘટનાઓના આધાર પર નિર્ણય કરવો, એની સિદ્ધિ કરવી. સિદ્ધિ કરવી એટલે ખ્યાલ આવે કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કરી શકતું નથી, એને પ્રૂવ કરવું. એને એ કરી શકતું નથી એ તો સત્ય છે, એને એ સત્ય જે આપણે સાંભળ્યું એને ધારણા કરી, પણ એની સિદ્ધિ કરવી. ક્યારે? હર ઘટનાઓ, હર નિમિત્ત ઉપાદાનના પ્રસંગોમાં એની સિદ્ધિ કરવી. અને એની સિદ્ધિ કરીને જ્યારે એનું સદ્ધાન થાય છે, એની પ્રતીતિ થાય છે, નિર્વિકલ્પ થઈ અને એની પ્રતીતિ જ્યારે સમ્યક થાય છે, તો અહીંયા કહેવામાં આવે છે કે એને પોતાનું કાર્ય અહીંયા પ્રાપ્ત કર્યું, પોતાનું કાર્ય થયું. એ મહત્વપૂર્ણ વાત છે. ત્યાં સુધી વાતો કરી, સમજાવ્યું, સમજ્યું, એ બધું પૂર્વમાં ચાલ્યું ગયું. પણ હવે આનું અવસર પાકી ગયું છે, કાળ પાકી ગયો છે. શાનો? સ્વાધ્યાયનો કે સ્વાનુભૂતિનો? સ્વાનુભૂતિનો કાળ પાકી ગયો છે. બસ બહુ થઈ ગયું હવે. હે ને? તો એમાં અહીંયા કહે છે, પ્રકાશકી એમ કહે છે કે તત્વ નિર્ણય બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. ફરીથી કહું છું, આખી પ્રોસેસ છે. જે જૈન સિદ્ધાંતોના માધ્યમથી જે પણ જે સિદ્ધાંતો આપણે ભણ્યા છીએ, ભણી રહ્યા છીએ, એની આપણા જીવનમાં, આપણી થતી ઉદયની ઘટનાઓમાં એની સિદ્ધિ કરવી, એને પ્રૂવ કરવા. બે ત્રણ વાતો છે. કશાય દુઃખરૂપ છે, હર સમય કશાય દુઃખરૂપ છે એવું ભાષિત થવું, એની સિદ્ધિ કરવી. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કરી શકતું નથી, એની સિદ્ધિ કરવી. અકર્તા છે, આત્મા જ્ઞાતા છે. આવા જે અમુક મૂળ સિદ્ધાંતો છે, એનું નયો દ્વારા, ઉદાહરણો દ્વારા આપણા જીવનમાં અને ઘટનાઓમાં આનું પ્રૂવ થવું, આની સિદ્ધિ થવી, અને આવી સિદ્ધિ થાય પછી સદ્ધાન થવું.
હવે શ્રદ્ધાંત થયું ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે હર વસ્તુ પરિપૂર્ણ છે, હર વસ્તુમાં કાંઈ કરવા લાયક નથી, ગુણ પર્યાવત દ્રવ્ય છે, તો વિકલ્પનું કોઈ વજૂદ નથી, તો નિર્વિકલ્પ થઈ, સમજો નિર્વિકલ્પ થઈ અને એ જે આપણે સાંભળ્યું છે, નિર્ણય કર્યો છે, એની પ્રતીતિ સમ્યક થાય છે. એના પહેલા કોઈ પુરુષાર્થ નથી, એનાથી જુદો કોઈ પુરુષાર્થ નથી. પૂર્વમાં જે પણ પર્યાયના પેટમાં જે પુરુષાર્થ કરવામાં આવે છે નિર્ણયનો, એની આ સિદ્ધિનો, એનું એ પ્રમાણે પ્રૂવ કરવાનો એ પૂર્વમાં હોય છે. પરંતુ એ જ્યારે એ વસ્તુની પ્રતીતિ ક્યારેક થઈ કહેવાય, જ્યારે હું પૂર્ણ છું, દુનિયામાં વસ્તુ પૂર્ણ છે, એની પ્રતીતિ થઈ ક્યારે કહેવાય? એક પ્રયોગ, સામાન્ય પ્રયોગ, ખ્યાલમાં આવે છે? મતલબ દરેક વસ્તુ પૂર્ણ છે, આપણે સાંભળ્યું. પૂર્ણ છે એટલે શું? હયાત છે, નિરપેક્ષ છે, કાયમી રહે છે, પોતાનું કાર્ય કરવામાં, કયું કાર્ય એના પ્રયોજનભૂત કાર્ય કરવામાં સમર્થ છે, સક્ષમ છે, હર સમય થવું એનું એનામાં જ્ઞાન પ્રયોજનભૂત ક્રિયા છે, અદભુત ક્રિયા છે, તો એ ક્રિયા કરવા માટે સમર્થ છે. તો એ પ્રમાણે અગર જો આપણને સિદ્ધ કર્યું, પ્રૂવ કર્યું, બરાબર છે, તો એની પ્રતીતિ થઈ ક્યારે કહેવાય? મારો પ્રશ્ન છે. પ્રતીતિ થઈ ત્યારે કહેવાય કે જ્યારે પૂર્ણ છે, તો બધી વિકલ્પનું શું કામ? તો કહે કે નિર્વિકલ્પ થઈ આવે અંતર્મુહૂર્ત, તો એ જે પ્રતીતિ છે, આગમના આશ્રય થતી પ્રતીતિ છે, એ પ્રતીતિ સમ્યક પ્રતીતિ થઈ કહેવાય. એ અહીંયા કહે છે, એને આરાધના કહે છે. બસ એકમાત્ર આ પ્રયોજન છે, અહીંયા લખે છે કે તત્વ નિર્ણય પૂર્વક સ્વાનુભૂતિ, આ સ્વાનુભૂતિ કહેવાય. એની સાથે એનું ફળ શું છે? નિરાકુલતા છે. એ નિરાકુલતાનું ફળ અહીંયા કહે છે કે એ પ્રાપ્ત થાય એવી આ પત્રો લખવા પાછળની એકમાત્ર ભાવના છે, એવું અહીંયા કહ્યું છે. આગળ થોડું થોડું જોતા જઈએ અને પછી મૂળ વિષય ઉપર આપણે આવી જઈએ છીએ. એના પછી અભયજી સાહેબે અહીંયા લખી છે બે ત્રણ વાતો અહોભાગ્ય કરીને, હે ને? આજે બધી પ્રસ્તાવનામાં પૂર્વમાં જે લખવામાં આવે ને એના તરફથી થોડી ચર્ચા છે. તો એમાં નામ આપ્યું છે અહોભાગ્ય. અહીંયા શું કામ લખ્યું છે અહોભાગ્ય? જો હેડિંગમાં આપ્યું છે લૌકિક વ્યવહાર કા લોકોત્તર રૂપ. લૌકિક વ્યવહાર શું છે? પત્રો છે, જે પણ મતલબ કે સાધર્મી જનોની જે જિજ્ઞાસા થાય છે એના ઉત્તર રૂપ આ પત્રો લખવામાં આવ્યા છે. તો એક પત્ર વ્યવહાર પહેલા લૌકિકમાં શાના માટે કરવામાં આવતું એનું થોડું જ્ઞાન કરાવ્યું છે, અને એ જે લૌકિક વ્યવહાર છે એનું લોકોત્તર રૂપ શું છે એનું થોડું જ્ઞાન કરાવ્યું છે. બહુ જ અદ્ભુત વિદ્વત શૈલીમાં અહીંયા એમને થોડી ચર્ચા કરી છે. એને થોડું આપણે જોતા આગળ વધીએ છીએ. अपने विचारों तथा जीवन की घटनाओं को दूरवर्ती परिचित व्यक्ति के पास भेजने के लिए पत्र लेखन अति प्राचीन विद्या है. बराबर? पत्र लेखन હવે તો ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી બહુ વધી ગઈ, વોટ્સએપ છે, ફેસબુક છે, અને ઘણી બધી વધી ગઈ. સેકન્ડોમાં તો એકબીજા પાસે મેસેજ જઈ શકે છે, પણ પહેલાના જમાનામાં એવી કોઈ વ્યવસ્થા હતી નહીં. તો અહીંયા એકમાત્ર પત્ર વ્યવહારનો એક, ભલે કોઈ બી ઘરમાં કોઈ બી ઘટના ઘટી હોય તો એનો પરિચય કરાવવા માટે પત્ર વ્યવહારથી કરાવતા. તો અહીંયા કહે છે કે એ બધી એકદમ અતિ प्राचीन આ પદ્ધતિ છે. એમ લખ્યા છે कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजने के आख्यान हमारे प्राचीन साहित्य में भी मिलता है. આ સામાન્ય કહ્યું. હવે એના માટે કઈ ખાસ વાત કરવી જોઈએ અહીંયા કે प्रायः संयोग वियोग अथवा दैनिक घटनाओं के आदान प्रदान हेतु पत्र लेखन का उपयोग किया जाता है, परंतु अब यहाँ लोकोत्तर रूप, पेलो लौकिक रूप, परंतु आत्महित की प्रेरणा, तत्वचिंतन, सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आध्यात्मिक अनुभूतियों के आदान प्रदान हेतु जिज्ञासाओं समाधान ये બધું પત્ર लिखने के उदाहरण भी मिलते हैं. આના માટે પણ પત્ર લખવાના ઉદાહરણો જીનાગમમાં અર્થાત તો અહીંયા મળે છે. બહુ મોટી વસ્તુ છે આ. જો એમાં સૌથી પહેલા રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠી લખ્યું છે, અહીંયા લખ્યું છે आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा मुल्तान नगर के साधर्मियों को लिखा गया पत्र रहस्यपूर्ण चिट्ठी बनकर आज भी जिज्ञासुओं की शंकाओं का समाधान कर रहा है.
બરાબર. એના પર ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનો પણ ખૂબ એના અદ્ભુત અધ્યાત્મ સંદેશના નામથી આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. પંડિત ટુડરમલજી રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠીમાં એક ખાસ વાત કરે છે. શરૂઆતમાં લખે છે અહીંયા કે આ વર્તમાન કાળમાં અધ્યાત્મ રસના રસિક જીવ બહુ થોડા છે અને અનુભૂતિનું પ્રયોજન વાળા જીવો બહુ થોડા છે. પુણ્યની રુચિ વાળા જીવો ઘણા છે અને અધ્યાત્મની રુચિ વાળા જીવો બહુ થોડા છે. ધન્ય છે તેમને કે જે સ્વાનુભવની વાર્તા પણ કરે છે. આ સ્વાનુભવ પત્રાવલીના આધાર પર ચર્ચા કરવી છે ને એટલા માટે કહું છું. મને ખ્યાલ છે કે આ 23મી શિબિર છે. पंडित जी आप तो कई बार आते भी हो, ज़्यादा करके आते हो કે સવારના જે આ સમયનું જે પ્રવચન હોય છે, સ્વાધ્યાય હોય છે, એમાં આપણે એક દ્રવ્ય દૃષ્ટિ પ્રકાશ है ને જે જબરજસ્ત સોગાણીજી દ્વારા જે બોલ લખાયા છે કે ઊંઘ ઉડાવી દે એવી જાતિના જે એમાં અનેક સિદ્ધાંતો રજૂ કર્યા છે. પછી દ્રવ્ય દૃષ્ટિ જીનેશ્વર, પર્યાય દૃષ્ટિ વિનેશ્વર, પછી બેન્સીના વચનામૃત, એવી અનેક ગુરુદેવશ્રીના વચનામૃત, એમના પ્રવચનોના કેટલાક અંશો, એના માધ્યમથી આપણે અત્યાર સુધી ઘણી ચર્ચાઓ કરી છે સેવાના સમયમાં. અને છેલ્લા 2 વર્ષથી મારા ખ્યાલથી હું આ સ્વાનુભવ પત્રાવલીના પત્રો લઈ રહ્યો છું. 2 પત્રોની ચર્ચા આપણે થઈ છે. 3જા પત્રની ચર્ચા આપણે આજે પ્રારંભ કરી છે. એના પહેલા એને થોડી ઘણી આ સામાન્ય ચર્ચાઓ આપણે કરી લઈએ છે. છતાં બી અનુભૂતિનો પ્રયોગ આવ્યા વગર તો રહે નહીં. હમણાં 5 મિનિટ પહેલા એક પ્રયોગની ચર્ચા આપણે કરી લીધી છે. એટલા માટે વચ્ચે મારે આ બ્રેક લેવી પડી કે આ એક સામાન્ય ચર્ચા પણ અપેક્ષિત છે. એમાં પણ કેટલીક ચર્ચાઓ આપણને પ્રેરણાદાયી હોય છે. એમાં લખે છે કે ધન્ય છે તેમને કે જે સ્વાનુભવની વાર્તા પણ કરે છે. હમણાં કહ્યું હતું કે અનુભૂતિ વગર આ જીવન પશુ સમાન છે. અનુભૂતિ વગરનું જીવન અવિવેકી છે. એટલા માટે અનુભૂતિ અને એના વગર કોઈ જીવ એમ કહે કે હું સુખી છું તો ભ્રમમાં છે. સ્વાનુભૂતિ વગર કોઈ જીવ એમ માને કે હું સુખી છું તો કે ભ્રમમાં છે. અહીંયા એ વાત ખાસ એટલા માટે અનુભૂતિની ચર્ચા આપણે ખૂબ કરવી. જેટલા બી પ્રવચનો થશે એમાં બી અનુભૂતિની પ્રમુખતાથી ચર્ચા કરવામાં આવશે. બરાબર છે. પછી આગળ લખે છે यद्यपि किसी व्यक्ति का समूह विशेष की विशिष्ट मान्यताओं और परिस्थितियों के लक्ष्य से पत्र लिखे जाते हैं, अतः वे सार्वजनिक और सर्वकालिक साहित्य नहीं बन सकते. तथापि जीवन की समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान शाश्वत साहित्य का रूप लिए बिना नहीं रहता. बहुत मोटी बात है. आज आध्यात्मिक जो समाधान है एक प्रकार थी शाश्वत साहित्य रूप में एक प्रकार थी लाभ આપણને મળે છે. તો કઈ વાતો છે. હવે એક વાર લખ્યું છે એમને पंडित जी संबंध में બધા परिचित છે. आदरणीय पंडित जी द्वारा रचित आध्यात्मिक पूजन, स्तवन, संबोधन एवं कथा साहित्य से तो समस्त जैन समाज परिचित है ही, परंतु उनके गहन चिंतन से प्रस्फुटित पत्र अभी तक गुप्त गुफा में ही छुपे हुए थे, जिन्हें प्रकाश में लाने की काल लगती अब पक गई है ने. અહીંયા पंडित जी લખે છે કે આ અનુભૂતિના જે ડિરેક્શન છે, અનુભૂતિનું જે ગાઈડન્સ છે, એવા પત્રો એ છપાવવાની કાળ લગતી પાકી ગઈ છે. મેં તો શરૂઆતમાં જ કીધું કે અનુભૂતિ કરવાનો કાળ પાકી ગયો છે. વાસ્તવમાં આટલી 23 વર્ષ ચર્ચા થઈ કે હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું, આત્માનુભૂતિ સ્વરૂપ છે. અનુભૂતિ કરવી પડે એવી વસ્તુ સ્વરૂપમાં છે જ નહીં. અનુભૂતિ થઈ રહી છે. આ જ્ઞાનાનુભૂતિ એ જ આત્માનુભૂતિ છે, અથવા એ જ હું છું. બસ એવી અનુભૂતિના દ્વારા નિર્ણય કરી લે, એ પ્રકારે એની શ્રદ્ધા સમ્યક કરી લે તો અહીંયા કહે છે કે એ કાળ પાકી ગયો છે. પોતાના પરિચય કરવાનો, પોતાના આત્માનો અનુભવ કરવાનો, જન્મ મરણનો અભાવ કરવાનો, જન્મ મરણની સંતતિ રોકવાનો કાળ પાકી ગયો છે. બહુ થઈ ગયું. એના હમણાં છે ને, હું હમણાં મંદિરથી આવતો હતો દર્શન કરીને, 2 પૂજારી છે ને, તો એ પૂજારી એમ કહે કે ભાઈ કેસરની ડબ્બી લાવ્યો છે કે નહીં એમ પૂછતો હતો. પેલા ભાઈને કહેતો હતો. એટલે ઓલો કે तुम चिंता मत करो, सब काम अपने आप हो ही जाते हैं.
है ना, तुम चिंता मत करो, दुनिया का कोई काम नहीं रुकता, आ समय कोई काम नहीं रुकता, हकीकत है। पंडित जी साहब ने एक प्रवचन में मैं सांभळ्યું હતું कि निमित्त प्रधान कथन होता कि दुनिया के सब काम जो है उनके लिए तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। अतुल भाई पंडित जी ने कहा कोई ना कोई आ ही जाएगा, निमित्त प्रधान कथन। वैसे हर काम अपने 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 समय में हो ही जाता है, पर इन्हें खास कई बार अपना काम करने के लिए तो कोई नहीं आएगा, खुद करना है। ऐसा नहीं कि कोई हमारा मोह का अभाव करने के लिए कोई किसी की दुआ काम आएगी या दवाई काम आएगी, ऐसा कोई वस्तु स्वरूप नहीं है। इसलिए तुम गुरुदेव सिंह शब्द में आजे करे काले करे अनंत काल बात करे पड़ता रहे आत्म कल्याण माटे तत्व प्रतीति करवी योग्य है। अनेक वातों अनेक सामान्य वातों भी सामान्य कथन होय पण एनो भाव बहुत ऊंचो होय छे मैया कहे छे। आदरणीय पंडित जी द्वारा रचित आध्यात्मिक पूजन स्तवन संबोधन एवं कथा साहित्य से तो समस्त जैन समाज परिचित है, परंतु उनके गहन चिंतन से प्रस्फुटित पत्र अभी तक गुप्त गुफा में छुपे हुए थे, जिन्हें प्रकाश में लाने की काल अब पक गई है। अतः यह संकलन प्रकाशित हो रहा है। एक प्रकार से हमने संकलन विषय बहु प्रसन्नता व्यक्त करी थी અને अंतिम बात कहे थे, इन पत्रों में प्रवाहित अध्यात्म रस का अनुभव मात्र इन्हें पढ़ने से नहीं, हर विद्वान आ बात कहे थे अभी है ना। पहले तो स्वाध्याय इतना चलने लगा, अभी कह रहे कि जो भी है आत्मा का अनुभव मात्र स्वाध्याय से नहीं होगा। अभी कहने लगे स्वाध्याय नहीं यार, मैं पहले स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय बहुत होने लगा तो ये बात आने लगी कि जो अध्यात्म रस का अनुभव मात्र स्वाध्याय करने से नहीं होगा, अनुभव करने से होगा। तो अनुभवनी प्रेरणा आपवा लाग्या है, श्रद्धान कर निर्णय कर એને આપણે તો બહુ લઈએ છીએ અભ્યાસ રૂપ વેદ જ્ઞાન, આગમ આશ્રિત વેદ જ્ઞાન, અભ્યાસ रूप वेद ज्ञान, परिणमन रूप वेद ज्ञान। आगम आश्रित वेद ज्ञान बहुत हो गया, ये कह रहे हैं। मात्र आगम आश्रित वेद ज्ञान से काम नहीं होगा। अभ्यास रूप वेद ज्ञान है ना, गर्भित शुद्धता है ना, पर्याय में होने वाली पूर्व की पर्याय में होने वाली तैयारी। अभ्यास रूप वेद ज्ञान का अर्थ है कि जो भी ये सिद्धांत है उसको सिद्ध करो। जो भी हमने आगम आश्रित वेद ज्ञान हमने धारणा ज्ञान में है हमारे पास, उसकी सिद्धि होना, हर समय उसका पक्ष आना, हर समय सत्य का पक्ष बनना, वो अध्यात्म रूप वेद ज्ञान है, अभ्यास रूप वेद ज्ञान है। और उसके आधार पे जब सामायिक में बैठते हैं तो उस संबंधी अंतर्जन छोटे विकल्प भी नड़ते हैं, बोझा लगता है और वो भी समाप्त हो जाते हैं और निर्विकल्प दशा को प्राप्त होती हुई जो हमने धारणा ज्ञान में अभ्यास रूप के वेद ज्ञान में जो हमारी निर्णय के आकार में था वो प्रतीति सम्यक हो जाती है, वो आत्मा की अनुभूति है। यहाँ कह रहे हैं कि इस पत्र मात्र पढ़ने से काम नहीं होगा, है ना, अनुभव करने के लिए लिखा गया है। देखो लिखा है, अध्यात्म रस का अनुभव मात्र इन्हें पढ़ने से नहीं अपितु इनका बारंबार मनन चिंतन गोलन से अनुभव होगा। अतः सभी साधर्मी जन के इनके निमित्त से साधक भाव प्रकट करके साध्य की ओर अग्रसर हो, ऐसी भावना अभय जी साहब ने भी इन्होंने यहाँ व्यक्त करी है। और इसके बाद जो अब तीसरा पत्र हमें आज प्रारंभ करना है ना, समय 15 मिनट है हमारे पास। तो इसमें ये जो विषय सूची में जो जितने भी हेडिंग दिए है हर पत्र का है ना, वो जो संकलनकार ने दिया होगा शायद, मैं ऐसा अनुमान करता हूँ, चिन्मय साहब ने यहाँ जो है ना विनोद जी चिन्मय इनके संपादन संकलन कर रहे हैं, तो इनके द्वारा शायद दिए होंगे जो भी है। तो मैं जो भी विषय सूची में जो भी एक एक पत्र का जो नाम दिया गया है, नामकरण किया गया है, तो वो भी बहुत ही इतना हमें वो विषय की ओर ले जाता है कि इस पत्र में संकेत किया है कि इसमें क्या बात आने वाली है, ऐसे इन्होंने नामकरण किया है। तो जो पहला पत्र है इसका नाम क्या है, पहला पत्र नाम सुनते, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, जो हो गया है। पहला पत्र हमारे शायद 2 साल तक हमने चर्चा की थी,
गजब की बात है कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। एमा समस्त परमागम वास्तव में सार આવી ગયું। क्या है इसका अर्थ? क्यों ये ज्ञायक तो ज्ञायक ही है की बात आई। पहले ये समझ लो कि ये निर्बंध स्वरूप की अगर आराधना करनी हो, अर्थात निर्विकल्प जीवन जीना हो, वास्तव में पंडित जी ने यहाँ हमें अपने अधिकार जताते हुए निर्विकल्प जीने का आमंत्रण दिया है, क्योंकि एकमात्र निर्विकल्प रहना ही आत्मा की शोभा है, अधिकार है, स्वभाव है, धर्म है, पुरुषार्थ है और उसका फल निराकुलता है। निर्विकल्प होना और निर्विकल्प क्यों रहना है ना, उसका आधार दिया है, लॉजिक दिया है ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि विकल्प क्यों करना, आप बताइए। निर्विकल्प क्यों रहना, मैं बताऊंगा, है ना भाई। दो बातें हैं ना। दिन भर विकल्प करते हैं, ये करूं, वे करूं, वो करूं, उसका करूं, ये मेरा करे, मैं उसका करूं, करना चाहिए, ये होना चाहिए, जे भी अपने विकल्प 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 शुभाशुभ विकल्प। तो आप बताना कि विकल्प क्यों करना चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि विकल्प निरर्थक है ना, ऐसा निरर्थक है और अनर्थकारी है, ये दोनों सिद्धि होगी। अरे सिद्धि होगी तो फिर विकल्प से क्यों रहना। इसलिए प्रेरणा है कि निर्विकल्प से रहो, आनंद में रहो। निर्विकल्प से रहो यानी खुश रहो। निर्विकल्प से रहो यानी इसका अर्थ है कि रेस्ट करो। रेस्ट बहुत हो गया है ना, बहुत है, पढ़ाऊँ ये पढ़ूँ बहुत हो गया है ना, ऐसा है। रेस्ट करना चाहिए, बहुत समय चला गया ऐसे। तो ये सारी बातें आई है। तो उनमें ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। इसमें एक बात इन्होंने खास लिखी है, थोड़ा थोड़ा हम इसको याद करते हुए, स्पर्श करते हुए, जैसे आप लोग करते हो ना विधान में, 3 पूजा चली गई, चौथी पूजा है तो वो 3 पूजा के एक अर्घ आप करवा लेते हो, तो एक अर्घ अपन भी यहाँ चढ़ाते हुए आगे हम बढ़ते हुए तीसरा पत्र प्रारंभ करेंगे। सही है, पद्धति तो एक थे ना बराबर। तो यहाँ कहे थे कि निर्बंध स्वरूप की आराधना के मार्ग में देखो ये बात बड़ी है, जब पर के साथ ज्ञायक संबंध भी परमार्थ से नहीं है, तब बोधक संबंध के लिए अवकाश कहाँ। पत्र आया होगा कि आप हमें समझाओ, हमें बोध दो, है ना। तो पंडित जी ने लिख दिया है ना कि ज्ञायक भी संबंध नहीं आराधना के मार्ग में। अगर आपको आराधना ही करनी है, आराधना नो अर्थ वेदिया, आराधना नो अर्थ निर्विकल्प जीवन है ना, ये आराधना। अगर आराधना के मार्ग में अगर आराधना ही करनी हो, है ना, आपको प्रभावना करनी हो। देखो मैं कई बार प्रवचनों में भी कहने लगा हूँ कि जो बाह्य प्रभावना है ना भाई साहब, बाह्य प्रभावना में हम ऑक्यूपाइड रहते हैं और आराधना में ऑक्यूपाइड के काल में भी हम ऑक्यूपाइड नहीं रहते। ये ध्यान देना है ना। ये देखो अभी प्रभावना करनी हो, हमें तत्व प्रभावना करनी हो, कौन सा प्रश्न लेंगे, कौन सा पत्र लेंगे, ये पत्र में क्या कहेंगे, ये पत्र में विशेष बात क्या होगी, ऑक्यूपाइड हो गए। मैं नहीं कह रहा कि बॉम्बे से यहाँ आए है ना तो इसमें ऑक्यूपाइड है, वो तो छोड़ो, वो विकल्प वाला कल आप बता रहे हर समय ऑक्यूपाइड है ना। कौन सा पढ़ाएंगे, इसके बाद क्या, ये कहेंगे तो ज्यादा वजन पड़ेगा, ये कहेंगे तो जी को लाभ होगा, है ना, तत्व का वजन होगा, इससे लाभ होगा। कितना ऑक्यूपाइड रहता है ना। मगर आराधना में जो ऑक्यूपाइड जीवन है जिनका अभी 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 आराधना चले जिसकी, तो इसमें कौन बोले, कौन कहे, गुरुदेव जी का एक प्रश्न, आराधना है ना, कौन समझावे, समझाने के प्रसंग में, समझाने की घटना में, समझाने के प्रसंग में कौन समझावे, इसका स्वाद आते रहे, यानी समझाने वाला भी नहीं, घाता दृष्टा रहने रूप जीवन वो आराधना है। इसमें कोई नड़े नहीं है ना, अपना काम होए आनंद, अपना काम यानी आनंद में रहना, अपना काम एक ही आनंद में रहना, खुश रहना, ऐसा है। कई बातें हैं, आपको इसका टेस्ट आगे आते रहेगा। ये अद्भुत टेस्ट है, यानी ये टेस्ट लेना एक बार, ये वस्तु स्वरूप की ओर से अगर एक बार टेस्ट आ गया निराकुलता का, फिर उसके बिना जमता नहीं जीवन, ऐसा स्वरूप है। तो ये तो देखो प्रकृति का समस्त जो फंडामेंट है, व्यवस्था है,
वो जीव खुश रहे उस पक्ष में, आप देख लेना। प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था, लोक की समस्त व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था इस जीव को मोह नहीं होवे उस पक्ष में है। जीव निराकुल रहे उस पक्ष में, आप देख लेना। बस बात इतनी है कि वहां हमारा ध्यान जाए, उसका आविर्भाव हो। अभी तक हमारे ख्याल में वो तिरोभाव रूप से है, वो उधर हमारा ध्यान चला गया, समझ लो कि निहाल हो गया जी, उसी समय से रेस्ट हो गया। इतना बोझा लेके घूमना मुफ्त का है ना, कैसा होगा, कितने आएंगे अतुल भाई, कौन आएगा, पंडित जी पहुंचे कि नहीं पहुंचे, है ना, मुख्य वक्ता तो अभी आए ही नहीं, है ना, प्रवचन का कितनी टेंशन है। ये सब टेंशन का समाधान तत्वाभ्यास है, तत्व निर्णय है, वस्तु स्वरूप और वस्तु व्यवस्था का ख्याल है, करो तो समाधान है। कौन सा? वो पंडित जी आने का समाधान नहीं, उस संबंधी विकल्प का समाधान। वो उनका आना नहीं आना तो मतलब ही नहीं है, वो समस्या ही नहीं है। और किसी को है प्रॉब्लम? नहीं। तुम्हें क्यों है, हमें क्यों है? वो विकल्प, उसका समाधान है तत्वाभ्यास। इसी बात को यहाँ हमें देखना है। देखो, हाँ, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, इसमें लिखते हैं। इसका अर्थ है, सुनना है कि 2-3 पहलू बता के हम आगे चलेंगे, विस्तार नहीं होगा क्योंकि बहुत विस्तार 2-2 साल किया है इस बोल का, है ना, शायद आप तो भूल भी गए होंगे, है ना। देखो, याद रखना जो है ना, वो प्रैक्टिस नहीं है। याद तो भूल ही जाओगे, भाव आसन में रहना वो नहीं भूलोगे। कुछ बातें है, टिप्स होती है ना, याद रखने जाते हैं ना जय कुमार भाई, वो नहीं रहता, भूल जाते हैं। सुबह में क्या खाया वो याद नहीं रहता, है ना, क्या भोजन किया वो याद नहीं रहता। तो अगले साल, गए साल हमने क्या बोला है, कैसे याद रहेगा? ये तभी हमारे पास ये रिकॉर्डिंग है तो सुन लेते हैं कि यार ये कहा था, समझ आया कि नहीं? तो ये बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर भावासन हो जाए तो वो कभी नहीं भूलते। लोग ना बहुत कुछ भावासन क्या है क्या नहीं है, उसकी चर्चाएं होती रहेगी। वो भावासन का माहौल है ना। आत्मा के पास ज्ञान तो है मगर वेद ज्ञान नहीं है। फिर कहीं आगम आश्रित वेद ज्ञान तो है पर भावासन नहीं है। एक बार भावासन हो जाए तो आराधना हो जाए। कई बातें मिलेंगी इससे। देखो क्या कह रहे हैं कि जो हमें निर्विकल्प, निर्बंध का अर्थ क्या है? निर्विकल्प रहना यानी निर्बंध स्वरूप का मार्ग है, निर्विकल्प का मार्ग है ना, निराकुलता का मार्ग है। निर्विकल्प होना ही आराधना है। वितराग रहना ही आराधना है, यानी वितरागता पूर्वक ही जानना, रागद्वेष रहित ही पदार्थों को जानना, जानते हुए भी रागद्वेष नहीं करना, यही आराधना है। यही एकमात्र एक जीवन है जीव का। इसके अलावा कोई जीवन हो तो मरण है, ये ध्यान देना। तो ये कह रहे कि उसके लिए सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा? कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। क्यों? इसका अर्थ क्या? हर प्रसंग में, है ना, हर पोजीशन में क्या कहा? 2 बातें कहा। नरक आदि पर्यायों के प्रसंग में, हर पोजीशन में, या कोई भी पाप पुण्य के उदय में, 2 चीजें लेना। ये 2 ही चीजें तो है जहां हम भ्रमित होकर घूम रहे, है ना। कौन सा है? तो पाप पुण्य का उदय, पाप न उदय यानी पुण्य न उदय। ये प्रसंग हर व्यक्ति के जीवन में पाप का उदय, पुण्य का उदय, फिर पुण्य का उदय, फिर पाप का उदय, फिर पुण्य का उदय, ऐसा इससे प्रसंग। और दूसरा नर नारकादि पर्याय, पोजीशन, मनुष्य आदि पर्याय। तो इस सब में क्या बोलना, क्या है? ब्रह्म वाक्य ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, यानी उस रूप हुआ ही नहीं, ये कह रहे हैं। ज्ञायक तो ज्ञाता ही है। अरे जो ज्ञाता है वही ज्ञायक का परिचय है। धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे शांति से इसको हृदय में धारण करना। ऐसा है। क्या है ज्ञायक भाव? जानन स्वरूप, अकर्ता स्वरूप, है ना, जीव द्रव्य की पहचान, है ना, निर्वार स्वरूप, निवृत्ति स्वरूप, ये है ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव कह रहे हैं
जीव द्रव्य की त्रिकाली पहचान है। जीव का सुपर पावर हाउस है ज्ञायक भाव, शक्ति का संग्रहालय उद्देश्य बोलते, ऐसा इस प्रकार से जीव का वह तत्व है, जीवनो ये भाव है कि जिन्हें अपनावा लायक है, भोगवा लायक है ना, ये यहाँ से ज्ञायक भाव। जी ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, यानी अनेक नर नारकादि पर्याय गई, क्या हुआ आई और गई, पर मैं तो ज्ञायक ही रहा, है ना। इसलिए उन पर्यायों के लिए, उन पोजीशन के लिए और अनेक पाप पुण्य का प्रसंग आया, फिर भी मैं तो अप्रभावी ज्ञायक ही, जानने स्वरूप ही रहा, है ना। इतना तो प्रूव हो ही होता ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ये मंगलमय सिद्धांत है, ये मंगलमय वास्तव में एक रजुआत है, ये मंगलमय निरूपण है कि तुम तो ज्ञायक हो, तुम तो देह हो ही नहीं, नर और नार की तुम तो हो ही नहीं। देखो ये बात करते हैं ना, ज्ञान से सिर्फ समाधान है। वो जो भी शरीर में कोई रोग आदि आए, वो शरीर को पता नहीं है, पर जिसको पता है वो तुम हो। कितना सिंपल बात है ना। रोग हुआ वो तुम नहीं हो, वास्तव में रोग तो अज्ञानी ने दिया हुआ शब्द है, तो उसका उस रूप पढ़ने में हुआ उद्गल का, शरीर का जो भी जुड़ना परमाणु का, बिछड़ना परमाणु का, सड़ना गलना फलना जो भी है, वजन का बढ़ना घटना, भारी हल्का होना जो भी है ना, वो उसे पता नहीं, किसे, उस शरीर को, उस उद्गल के पिंड को पता नहीं है ना, उसकी अनुभूति उसे नहीं है, उसका ख्याल उसे नहीं है। पर जिसमें ख्याल आवे इसका, जिसको पता चले, है ना, वो ज्ञानानुभूति, वो आत्मानुभूति, वो आत्मानुभूति है, वो आत्मा है, वो आत्मा नहीं है। गलना फुरना वो आत्मा नहीं है, जिसमें जानना वो आत्मा है ना, मैं हूं, बस इतना। वो कुछ भी हो जाए इसमें, गलना होए, जुड़ना होए, भारी होए, हल्का होए, है ना, संयोग होए, वियोग होए, वहां तक ले लो, बिछड़ना हुए, सब कुछ हुए, सब कुछ जानना आत्मा में होता है, जिसमें जानना होता है वो मैं। ये ज्ञानानुभूति है वो आत्मा है, आत्मानुभूति है वो आत्मा है, यानी वो मैं हूं, ये है। तो ये ज्ञायक ही ज्ञायक है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ऐसा ख्याल में आ जाए तो क्या होगा, निर्बंध स्वरूप का अनुभव होगा। क्या होगा, निर्बंध स्वरूप का अनुभव, यानी निर्विकल्प होगा, यानी उससे जब मैं जानने स्वरूप में हूं और वो हमेशा हूं, है ना, हमेशा जानने स्वरूप रहता हूं, ऐसा मैं हमेशा हूं, हर काल खंड में मेरी विद्यमानता है, हर काल खंड में मेरी वो सत्ता, है ना, वो पाई जाती है, ज्ञान अपना मुझे प्रसिद्ध करता हुआ वर्तता है। ये हमारे ख्याल में आ जाए, हमारा वहां ध्यान जाए, है ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि वह हमारे ध्यान में भी आता है, मेरे ध्यान करना नहीं चाहता, वहां ध्यान देना नहीं चाहता। अगर हमारे ख्याल में आ जाए तो ये कह रहे हैं कि वो कोई संबंध ही नहीं है, इसकी सिद्धि होती है। क्या कहा, कोई संबंध नहीं, सर्व संबंध बंधन तीक्ष्ण छेदी नहीं। कैसे छेदोगे, कैसे करोगे, सर्व संबंधनो बंधन तीक्ष्ण छेदीने, विचर सु कब महत पुरुष ने पंथ। अच्छा कैसे छेदोगे, संबंध ही नहीं है, ऐसा सिद्ध करने का नाम है संबंध को छेदना, है ना। ऐसा संबंध है फिर छेदे, ये बात है ही नहीं सृष्टि स्वरूप में। क्यों, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, पहले संबंध है वो तो नक्की करो, फिर संबंध को छेदे। तो क्या संबंध है ही नहीं, ऐसा निर्णय हो जाए, एम नक्की थई जाए, एम सिद्ध थाय छे, है ना, ऐसी सिद्धि होती है, प्रूव होता है। बताओ क्या संबंध है, बताओ जयेश भाई, समय तो ऊपर, आज कोई 5 मिनट में आगे पीछे तकलीफ नहीं, क्या संबंध है, ध्वज ही लहरा देते हैं, शरीर સાથે શું સંબંધ છે, કેમ સંબંધ છે, તમારું કોઈ ચિહ્ન છે એમાં, તમારી આજ્ઞામાં રહે છે, તમને સાથ આપે છે, સાથે આવે છે, તમારું કહ્યું માને છે, તો
कई अपेक्षाएं તમારું છે, तो अपना कहने का इतना झूठा क्यों बोलते हैं? इतना झूठ सही नहीं है। और ये सिद्धि होती है, ये कह रहे हैं कोई भी संबंध नहीं है परमात्मा से, व्यवहार से जो कहते हैं संबंध है वो इसीलिए बात खड़ी हुई कि खरेखर संबंध नहीं, साथ में रहने को संबंध जो कहते हैं लोक में, वो लोक संज्ञा में, वास्तव में अथवा जिनवाणी में व्यवहार से इसलिए बताते हैं कि वहां आत्मा है, शरीर है, वहां आत्मा है, उतना बताने के लिए बता दिया। तो तुम आत्मा को देख लो, परमार्थ से देख लो, जो परमार्थ है उसको देख लो, भोग लो, अनुभव कर लो, ऐसा ही कह रहे हैं। तो क्या भोग लो? संबंधी नहीं है। अब संबंधी नहीं है तो क्या हो गया? निराकुल। फिर विकल्प क्या? बोझा क्यों? संभाले, ये करे वो करे, खिलाए पिलाए, उसका विकल्प कौन खिलाता है? कोई खिलाता नहीं। हम तो खिलाने का विकल्प कर रहे थे, अब विकल्प की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा संबंध नहीं। हम संबंध मानेंगे तो विकल्प खड़े होंगे, संबंध तो है ही नहीं और नहीं मानो, जब है ही नहीं तो नहीं मानो, विकल्प खड़े नहीं होंगे। उसका नाम ज्ञायक ही ज्ञायक है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, इसका नाम है ना, ज्ञायक ही रहता है। इसलिए कोई पर्याय विशेष में आकर प्रभावित होकर उसके लिए हम अपने ज्ञान श्रद्धान आचरण को समर्पित करते हुए हम अपना दिवाला नहीं निकाले। ध्यान रखना, इस बात की सावधानी करना। तो यहाँ अंतिम में लिखते हैं कि वे ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, निरपेक्ष, स्वयं में ही परिपूर्ण, आनंदमय, प्रभुता संपन्न। ये एंड है, दी एंड। ये पहला पत्र हमारा यहाँ हुआ था। अब जो दूसरा पत्र जो है वो मैं कल उसका सामान्य जो अर्थ है, सामान्य अर्घ चढ़ाते हुए है ना, उपादान निमित्त स्वरूप उन्होंने इसमें थोड़ी प्रशंसा करी है, क्लैरिटी करी है। प्रशंसा करना यानी स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण में ये तो प्रसन्नता होती है ना, और उसी प्रसन्नता में तो वास्तव में हमारा जो अज्ञान है वो अज्ञान दबता है। अभी तक ज्ञान दबा था, अब दबना नहीं, दबने का जरूरत नहीं है, किसी के प्रभाव में आना नहीं, किसी पोजिशन की। उपादान निमित्त की ओर से है ना अकृत स्वभाव को रजू करेंगे और हमें दर्शन होगा अकृत स्वभाव का। तो ये दूसरे शुद्ध चिद्रूपाय नमः, ये जो सूत्र है वो सार्थक होगा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न मुझे यहाँ पढ़ना है, इसका नामकरण किया गया है शुद्धात्मा ही सच्चा गुरु है। इस तीसरे पत्र पे अपन जो भी 4-5 दिन जो भी है हम इसकी चर्चा यहाँ करेंगे। सहजानंद